Very good evening to everyone. We can make this process of online form filling simple. What needs to be understood is how you get into the best college, okay, of your choice. I hope आप सब ने अपने कुछ एस्पिरेशंस रखे होंगे, आप सबका कुछ एक प्रायोरिटी लिस्ट होगा based on your performance and based on your results. You would be targeting to get into one of the colleges of your choice. Okay, now college is one thing which the manner in आप किस तरीके से अपना फॉर्म, so if you make any small error in analyzing your data, in filling it up, in submitting it to the government authority, then the error is not going to be on their. All right, students, I think there was some technical issues. So we'll be starting all over again. I suppose there were some technical issues due to which the session was not streaming well. I think the connections are fine now and we can proceed ahead. So, जैसा मैं आप लोगों से बोल रहा था, I suppose we were talking about the form filling aspect for your admissions into FYJC. Okay, now this is one important aspect. Now, why important is because you need to understand this entire process step by step. And I, on behalf of Adyan, welcome you all to this session, to all the students and the parents who have connected with us. Now, basically, everyone has given their best, okay, as far as your examinations are concerned. See, preparing for the exams, giving your exams, we are almost at that stage where we are waiting for our results. Okay, this is one thing.
But this online form filling process is altogether a completely different aspect. ये पूरी तरीके से एक अलग प्रोसेस है. Many students, many parents feel that this is just like the previous years. पहले जैसा हुआ करता था, on paper we used to fill the form, colleges में submit करते थे. Many people, many students, parents feel that it is just like that, सिर्फ on paper नहीं, अब online हो गया है, everything is computerized now. That's not all. हम किस तरीके से इस फॉर्म को फिलअप करते हैं, हम किस तरीके से इसमें हमारा इंफॉर्मेशन, हमारा चॉइसेस, हमारे प्रेफरेंसेस को पुट अप करते हैं, गवर्नमेंट का जो एडमिशन प्रोसीजर है वो उसी तरीके से हमें कॉलेजेस के साथ रेसिप्रोकेट करता है. नाउ एज अ स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, आई होप and I know, I believe that every one of you have given your best. Okay, you have poured in all your efforts, all your knowledge, all your intellect in giving your best performance in your board examinations. Although towards the end थोड़ा सा situation rough हो गया था, we were uncertain situations में हम held up हो गए थे due to this pandemic, but gradually the things cleared up and today we are just a few weeks away from the 10th standard board results. Okay, the first milestone of your academic life, what I would say. Okay, and this process of online form filling, you know, आपको इस चीज को बहुत minutely understand करना है. Okay, and इस process को आपको correct तरीके से अंडरस्टैंड करके अपने फॉर्म को फिल करते वक्त यूटिलाइज करना है all the information that you are going to get today from this session. Okay, because this will determine which college you enter in. Okay, as a student of 10th standard, as a school going student, सबके एस्पिरेशंस होते हैं, सबके कुछ थॉट प्रोसेस होते हैं. मेरे को एक पर्टिकुलर कॉलेज में जाना है, एक पर्टिकुलर फील्ड में हम एंटर करना है, एक पर्टिकुलर कोर्स में मुझे अपने आप को एडुकेट करके क्वालिफाई करना है. ओके, एंड आई होप क्वाइट अ फ्यू ऑफ यू ऑल मस्ट हैव डिसाइडेड आल्सो बाय नाउ कि मुझे कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है या आर्ट्स लेना है. ओके, नाउ फर्स्ट बिग मिथ दैट आई वुड लाइक टू क्लियर आउट, मैं अभी ही उस मिथ को क्लियर करना चाहता हूं, वो ये कि अभी जो एडमिशन प्रोसीजर है किसी भी स्ट्रीम में, ओके, इन एनी स्ट्रीम, इट इज नॉट परसेंटेज रिस्ट्रिक्टेड. ओके, पहले 10 years back if I talk, okay, yeah, if not 10, at least 7 years back also if I say, it was percentage linked. The higher percentage students used to target science. Okay, जिनको थोड़ा mediocre percentage आता था, students used to think of getting into commerce. Okay, and the lower percentage one used to think that, you know, my intellect is low, so I should go in for arts. Basically, इस barrier को तोड़ने के लिए, okay, to break this barrier, this online admission procedure was started for no other reason. For no other reason. Understand this thing. Okay, आप पहले इस चीज को समझो कि ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर है क्यों. इट इज नॉट बिकॉज मैं हायर परसेंटेज वाला हूं, मुझे साइंस में जाना है, मैं मीडियोकर परसेंटेज वाला हूं, मैं कॉमर्स में जाऊंगा, आई एम बिटवीन 60 to 70, 75, आई शुड टेक कॉमर्स ओनली, आई एम फर्स्ट क्लास 60, 50, 60 परसेंटेज वाला स्टूडेंट हूं, मुझे आर्ट्स लेना चाहिए. टू ब्रेक दिस बैरियर, दिस ऑनलाइन एडमिशन प्रोसीजर हैज बीन स्टार्टेड. Okay, any student scoring any percentage, if he or she wants to enter science, can enter science. Any percentage student want to enter commerce, can enter commerce. And any percentage scoring student wants to enter arts, can enter arts. That is the thing. But what is important is how you select your colleges. इसका सबसे important aspect है how you select your colleges. Point number 1. The second thing, आपका जो फॉर्म है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है स्टूडेंट्स. योर फॉर्म इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. दे में ऑल्सो रेफर टू इट एज पार्ट ए एंड पार्ट बी. ओके, अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझ लेना. ओके, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, यू कैन नोट इट डाउन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशंस. यू कैन आस्क इट टू अस, यू कैन गेट इन टच विद अस, एंड वी आर देयर टू हेल्प यू थ्रू एंड थ्रू द प्रोसेस. सो the very first thing is you will be getting a login ID. अब ये login ID एक booklet के through मिलता है. Until the last year, a booklet used to be circulated by the government and the schools used to either distribute it free to their students or some of the schools used to also charge some minimal amount of 100-200 rupees to give over that booklet. अब ये booklet में क्या रहता था? आपके सारे instructions रहते थे.
ठीक है, आपके कॉलेज कोड्स रहते थे, प्रीवियस ईयर्स के कॉलेज के कट ऑफ्स रहते थे, एंड जोन वाइज उस पर्टिकुलर जोन में कितने गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं, कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ओके, इसका एक इंफॉर्मेशन होता था। बट इस बुकलेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता था वो होता था आपका लॉग इन आईडी। अब दिस ईयर, ड्यू टू दिस social distancing stigma, due to this pandemic, some of the schools have already started distributing the login IDs directly to the students over a phone call or over the WhatsApp message. They are utilizing some of the other medium to provide the students with their login ID already. Some of the schools may still go ahead and call you all in small groups, distribute the booklets to you. Okay. अब ये login ID आपको बहुत संभाल के रखना है. You cannot afford to forget this. You cannot afford to, misplace this login ID, because that is your identity for the government until you get an admission in a junior college, into your 11th standard, into your first year junior college. जब तक आपका सीट वहां पर सिक्योर नहीं हो जाता, your name, your information is nothing but that number, and all the information which is feeded with that number is you. So that number is very important. Okay. Now, you get that login ID, you log in into the site, okay, this site in which you have to fill up the part A or the first part of your form, or the part of the form which carries all your primary information. Primary information में इसको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसमें आपको अपने रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन फिलअप नहीं करना है. इट हैज नथिंग टू डू विद योर मार्क्स, इट हैज नथिंग टू डू विद योर परसेंटेज, ओके, इट हैज टू डू विद ऑल योर प्रिलिमिनरी डेटा, योर कंप्लीट नेम, ओके, योर कंप्लीट नेम, योर एड्रेस, योर आधार कार्ड नंबर, ओके, your parents' name, your hall ticket number is what will come under the part 1 of your form. Ab login ID and password. The first time you log in, you can change the password. आप first time login करने के बाद उसमें अपना password change कर सकते हो. Now, there are some reservation categories which is standard and followed across the city and the town. If you go through this chart, you will understand, based on the college, you have a minority quota for certain colleges. Okay, that is in Mumbai jurisdiction, it is 50%. In Thane jurisdiction also it is 50%. And ahead of Thane comes Raigad, even that is 50%. Every college has a certain management quota, जो management seats बोला जाता है, which is a minimal 5%. Now some schools have junior colleges attached to them. Okay. Now that is where the in-house quota comes. Okay. The junior college attached to a school. So that junior college, वो अपने school के जो students हैं उनको ही preference देते हैं. You have a reservation for servicemen and ex-servicemen related to any of the defense categories. Okay. You have a special category for arts and sports, which is 2 to 3%. Again, for the physically challenged one or the specially abled ones, there is a minimal reservation category of 3%. And for women educational empowerment, we have a good 30% hold. Now, this is what the constitutional reservations include based on the caste that comes under it. That is the SC, which is the highest, that is 13%, ST है 7%, VJ है that is 3%, NT is 2.5%, NTC is 3.5%, NTD and SBC is 2%, and OBC is 19%. Okay, so ये जो reservational criterias हैं, if you fall into these criterias, into any of these criterias, आप के पास इसका एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए. ओके, यू मस्ट हैव अ वैलिड सर्टिफिकेट. इट्स नॉट अबाउट ओनली हैविंग अ सर्टिफिकेट, अ वैलिड सर्टिफिकेट which has to be authorized by any of the regional authorities.
जब मैं रीजनल अथॉरिटीज बोलता हूं तो इसका ये मीनिंग होता है दैट एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मस्ट ऑथराइज दैट सर्टिफिकेट ऑफ योर्स. ओके, नाउ दिस इज our HSC results for this very year 2020. Now coming to the part 1 of the form, your school area will remain as MMR, that's the Mumbai Metropolitan Region. Applicant's status will remain as fresher as far as you are applying for this form for the first time. Now, code of the last school attended, ये आपको आपके स्कूल के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा. Your seat number, that is your hall ticket number. Your unique ID number, which will again be given by your school. Your date of birth in this particular format, that is DDMMYY. Mother's name. Board of examination, if you come on the other half of the screen, you will see board of exam. Whether you are from state board, from CBSE, from ICSE. Year of examination will be 2020. Month of examination will be March. Area. Now, this is the most important aspect. Select the area closest to your residence from the drop box. Try to understand this thing. Students, many of us make this mistake. हम लोग randomly किसी भी particular college को select करने जाते हैं, which is not correct. You have to analyze the coming years, that is your 11th and 12th, which is basically going to build your academics. It's going to build your academics because the ownership of your academic qualification from 11th standard onwards will completely rely on you. So you always should select the area which is closer to your residence. Many of us make this mistake. We are staying in Mulund, supposedly. We try to select a college which is in Churchgate, okay, which is in Andheri. You have to identify colleges in and around your area of residence, which will give you the benefit of time. It will give you the benefit of time. ये वो benefit है जो आपको आपके एकेडमिक्स में बेटर स्कोर करने में एंड आगे जाकर अपने टाइम को बेटर यूटिलाइज करने में हेल्प करेगा. It will really make no sense if you are staying somewhere in the central suburbs and you are traveling all the way to the south corner of Mumbai or to the western line of Mumbai just to complete your junior college education part. You have good colleges around each region. You need to identify those colleges and accordingly set your priority list. Your district will remain Mumbai suburban. Your state will remain Maharashtra. Taluka will be your town. Taluka will be based on your town and your area of residence. Guidance center. Guidance center क्या है, आप इसको समझ लीजिए. आपके रिजल्ट्स के डिक्लेयर होने के बाद गवर्नमेंट विल इशू अ लिस्ट ऑफ गाइडेंस सेंटर फॉर अ पर्टिकुलर एरिया. Like for example, if I'm talking about Ghatkopar West will have one guidance center, Ghatkopar East will have one guidance center. If I'm talking about Andheri West may have one guidance center, Andheri East may have one guidance center. This guidance center is authorized by the government. अब ये guidance center का काम क्या है? Suppose in the process of online filling up of your form, if you make any mistake, you cannot go back and rectify it. You have to approach these guidance centers to make
any changes in your form, be it in part 1 or be it in part 2. In both these parts, once you fill up the form, एक बार आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, आपने फॉर्म फिलअप करके फॉर्म को सबमिट कर दिया, then there is no looking back. If at all you realize later that you have made some mistake or you want to make some changes, you have to approach these guidance center based on your area of residence. You cannot just walk into any guidance center. आप किसी भी guidance center में नहीं जा सकते. ओके, मैं रहता हूं मुलुंड में, मेरा फ्रेंड रहता है विक्रोली में. ओके, विक्रोली का गाइडेंस सेंटर के बारे में मेरे फ्रेंड को मालूम है, चलो मैं भी मेरे फ्रेंड के साथ विक्रोली चला जाता हूं. इट इज नॉट पॉसिबल. आपको वहां पर एंटरटेन नहीं किया जाएगा. तो आपको आपका फॉर्म फिलअप करना है, एंड फॉर्म फिलअप करने के बाद इमीडिएटली यू मस्ट हैव एन आइडिया ऑफ वेयर द गवर्नमेंट एलोकेटेड गाइडेंस सेंटर फॉर योर पर्टिकुलर एरिया इज. क्योंकि आपके अगर कोई भी ग्रीवियंसेस हुए तो वो उसी गाइडेंस सेंटर में जाकर सॉल्व होंगे. बिकॉज अ सबमिटेड फॉर्म कैन ओनली बी एक्सेस्ड थ्रू द गाइडेंस सेंटर. आपने एक बार फॉर्म फिलअप किया, आपने उसको फिलअप करके सबमिट कर दिया, उसके बाद अगर आप उसको दोबारा एक्सेस करना चाहते हो, आपको गाइडेंस सेंटर जाकर ही उसका एक्सेस मिलेगा, वरना उसका एक्सेस आपको नहीं मिलेगा. सो इट इज ऑल्सो एडवाइजेबल दैट आप जब पार्ट 1 फॉर्म का फिलअप कर देते हैं, यू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट सो दैट यू हैव अ वैलिड प्रूफ ऑफ व्हाट यू हैव फिल्ड अप इन द फॉर्म फॉर योर रेफरेंस. आपके रेफरेंस के लिए आपके हाथ में फॉर्म का हार्ड कॉपी रहेगा. यू कैन ऑलवेज गो थ्रू इट एंड चेक आपने क्या इंफॉर्मेशन उसमें फिलअप किया है एंड क्या फिलअप नहीं किया है. नाउ व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन in this part 1? सबसे पहली बात, you can fill it as per your convenience. Okay, there are certain number of days which will be given to you. Okay, for now the date that has been given by the government is 26th July until 24th July. Until 24th July your respective schools will validate their IDs. हर स्कूल का भी एक ID है, तो स्कूल्स को 24th जुलाई तक का टाइम दिया गया है to get their IDs validated. आप जब पार्ट 1 का फॉर्म फिलअप करेंगे, वो पार्ट 1 जो फॉर्म का आपका है, इसको वैलिडेट आपका स्कूल करेगा. योर स्कूल्स विल बी वैलिडेटिंग दिस फॉर्म. ओके, द प्रिंसिपल थ्रू द लॉगिन ID of the school will validate your form. It is the authentication proof that you are a particular student of that school. Once your part 1 gets authenticated by your respective school administration or your school principal, only then you are eligible to access the part 2 or the part B of your form and fill it up as per your preferences. Part 1 will be open for y'all from 26th July. 26 जुलाई से सारे बच्चों के लिए पार्ट 1 ऑफ द फॉर्म विल बी अवेलेबल. आप ऑनलाइन जाकर इसको पूरी तरीके से फिलअप कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स मिस्टेक ना करें इस प्रोसेस में. गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी कम अप विथ अ डमी फॉर्म. ओके, इफ यू अप्रोच द गवर्नमेंट साइट राइट नाउ, you will come across a dummy form which you can fill it up and you can get an idea of how the actual form has to be filled up. Okay, क्योंकि actual form को fill up करने का and access करने का डेट 26 जुलाई onwards है. उससे पहले आप ये dummy form को fill up कर सकते हैं. fill up करके you can get an idea of how the information has to be filled. Now, after that form is validated, only then you can access your part 2 of the form. आपको कोई भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन फिलअप करना है, हर बार आपको एक्सेस करने के लिए अपना लॉगिन आईडी एंड उसका पासवर्ड लगेगा ही. सो द पासवर्ड दैट यू चेंज आफ्टर लॉगिंग इन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार लॉगिन करने के बाद पासवर्ड चेंज करना है, और वो जो चेंज्ड पासवर्ड है उसको प्लीज ध्यान से याद रखना. नोट इट डाउन एट अ प्रॉपर प्लेस.
and see to it that you don't misplace that place where it has been noted down and you don't forget it. Okay, because अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो रीसेटिंग द पासवर्ड इज नॉट अ इजी टास्क. आई टोल्ड यू फॉर एनी प्रॉब्लम यू विल हैव टू अप्रोच योर गाइडेंस सेंटर. एंड गाइडेंस सेंटर अप्रोच करने का मतलब ये नहीं है कि आप गाइडेंस सेंटर पे गए और आपका प्रॉब्लम चुटकी बजा के सॉल्व हो गया. ऐसा नहीं है. वहां पर बहुत से पेरेंट्स होंगे, बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने छोटे मोटे मिस्टेक्स किए होंगे. सो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट when you are filling up this information. Okay, and every small piece of information that you're filling up in it, you have to be very clear with it and you have to remember it until your admission is confirmed in a college. Now coming to part 2. part 2 जो फॉर्म का है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके कॉलेजेस का सिलेक्शन. ओके, नाउ कॉलेज का सिलेक्शन आपको किस तरीके से करना है ये आप समझ लीजिए. सपोज लेट अस से आई डिसाइड अ पर्टिकुलर कॉलेज A is what I want to go in for my junior college education, for my 11th and 12th. I think that I should be in college A which is in a particular area. Okay, now मुझे जो प्रेफरेंस लिस्ट भरना है कॉलेजेस का, इसमें 10 कॉलेजेस का ऑप्शन है मेरे पास. गवर्नमेंट इज टेलिंग यू बेस्ड ऑन योर मार्क्स, बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस, इट हैज टू बी आइदर ऑन योर मार्क्स और इट हैज टू बी आइदर ऑन योर चॉइस. यू कैन गिव 10 ऑप्शंस. ओके, नाउ इन दीज 10 ऑप्शंस ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पे भी किसी भी कॉलेज का नाम लिख दूंगा मुझे वो कॉलेज मिल जाएगा. That is not the case. आपको अपना प्रेफरेंस ऑर्डर डिसाइड करना है. इफ नॉट A, इफ आई एम थिंकिंग, इफ आई एम टारगेटिंग, अगर मैं ये टारगेट कर रहा हूं, अगर मैं ये एम कर रहा हूं कि मुझे कॉलेज A में एडमिशन मिलना चाहिए, दैट कॉलेज A हैज टू बी माई टॉप मोस्ट ऑप्शन, माई फर्स्ट ऑप्शन. 10 कॉलेजेस के ऑप्शन में मैंने कहीं पे भी मेरे प्रेफरेंस का कॉलेज लिख दिया, किसी भी ऑर्डर में लिख दिया, इट विल जंबल अप एंड इट विल स्पॉइल योर entire admission process. So please pay attention on this part. आपका जो स्पेसिफिक कॉलेज है आप उसको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे रखिए. एंड देन which is your second should come in the list as second. Which is your third priority? If not A, what is the option B? If not B, what is the option C? If not C, what is the option D? ऐसा करके आप मैक्सिमम 10 कॉलेजेस का ऑप्शन गवर्नमेंट को दे सकते हैं. दैट द गवर्नमेंट एडमिशन और सीट प्रोवाइडिंग प्रोसीजर कैन अलॉट मी अ सीट इन एनी ऑफ दीज 10 कॉलेजेस. नाउ सपोज आपने 10 कॉलेजेस का लिस्ट बनाया, 10 कॉलेजेस का लिस्ट बनाकर आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया. ओके, अब जो फर्स्ट लिस्ट आता है इसमें आपको मान लो 7 नंबर का कॉलेज एलोकेट होता है. कॉलेज विच इज इन योर प्रेफरेंस लिस्ट एट नंबर 7. यू हैव टू डू 2 थिंग्स. पहला, ये जो 7 नंबर का कॉलेज आपको एलोकेट हुआ है, यू हैव टू गो एंड टेक अ प्रोविजनल एडमिशन इन दैट कॉलेज सो दैट योर सीट, योर एडमिशन एटलीस्ट बिकम्स कंफर्म्ड इन दैट कॉलेज. So you have taken a provisional admission. Why provisional? Because ऊपर और 6 कॉलेजेस हैं मेरे लिस्ट में. फर्स्ट लिस्ट में मुझे कॉलेज नंबर 7 एलोकेट हुआ. अब अगर फर्स्ट लिस्ट में मुझे कॉलेज नंबर 7 एलोकेट हो रहा है, मैंने 10 कॉलेजेस के ऑप्शंस दिए हैं, अगर फर्स्ट लिस्ट में मुझे कॉलेज नंबर 7 एलोकेट हो रहा है तो कॉलेज नंबर 8, कॉलेज नंबर 9 एंड कॉलेज नंबर 10 मुझे एलोकेट होने वाला नहीं है. Okay, get this thing clear. In the further lists which are going to come, college number 8, 9 and 10 ये मेरे लिस्ट से अब निकल गए. Now what comes is the betterment option. Betterment in the sense 7 तो मुझे मिल गया, क्या मुझे शायद किसी लिस्ट में 1 to 6 में से कोई मिलता है तो मैं 1 to 6 में से किसी कॉलेज में जाना चाहूंगा. तो 7th नंबर के कॉलेज में मैंने अपना प्रोविजनल एडमिशन लेके रखा है.
You only have to take your provisional admission. This is not your confirmed admission. प्रोविजनल एडमिशन के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट नहीं करने होते, डॉक्यूमेंट्स का जेरोक्स सबमिट करना होता है. ओके, एंड एक मिनिमल चार्ज होता है विच इज अंडर 500 रुपीज, अंडर 500 रुपीज विच हैज टू बी पेड एट दैट कॉलेज, एंड यू हैव टू रिजर्व योर प्रोविजनल एडमिशन सीट एंड वेट फॉर द नेक्स्ट लिस्ट. अब अगर मुझे सेकेंड लिस्ट में कॉलेज नंबर 5 एलोकेट हो गया, जो मेरे प्रेफरेंस लिस्ट में कॉलेज नंबर 5 था वो एलोकेट हो गया, तो मैं कॉलेज नंबर 7 में जाऊंगा, उनको अपना एलोकेशन बताऊंगा. क्योंकि आपको जब भी कोई कॉलेज एलोकेट होगा, ओके, आपको उसका एक आपके लॉगिन आईडी पे, आपके लॉगिन स्क्रीन पे आपको वो कॉलेज का नाम दिखेगा एंड एलोकेटेड एडमिशन इन दिखेगा. तो एलोकेटेड एडमिशन इन में आपको वो कॉलेज को जाके दिखाना पड़ेगा. यू हैव टू गो टू योर कॉलेज नंबर 7, यू हैव टू शो देम दैट यू हैव बीन एलोकेटेड इन अ कॉलेज विच वाज हायर अप इन योर प्रेफरेंस लिस्ट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू आर कैंसिलिंग योर प्रोविजनल एडमिशन एंड टेकिंग द एडमिशन एल्सवेयर. ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स दैट फर्स्ट लिस्ट में मुझे कॉलेज नंबर 7 एलोकेट हुआ, सेकेंड लिस्ट में मुझे कोई कॉलेज एलोकेट ही नहीं. इट मे हैपन, सो डोंट पैनिक, डोंट पैनिक. आपने कॉलेज नंबर 7 में अपना प्रोविजनल एडमिशन लेके रखा है, एटलीस्ट 3 to 4 lists of admission are going to be out, and in these 3 to 4 lists you have a possibility of moving higher up your preference order. You have a possibility of moving from a lower grade college to a higher one which is up in your preference list. जो आपके प्रेफरेंस लिस्ट में ऊपर है. जरूरी नहीं है कि फर्स्ट लिस्ट में मुझे कॉलेज एलोकेट हुआ, सेकंड लिस्ट में भी एलोकेट होगा ही, थर्ड लिस्ट में भी एलोकेट होगा ही. हो सकता है फर्स्ट लिस्ट में एलोकेट हुआ, सेकंड में ना हो, सेकंड में नहीं होगा, थर्ड में होगा. ओके, सो ये थोड़ा सा पेशेंस वाला टाइम है. सो डोंट गेट पैनिक्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल खुद पैनिक मत हो जाओ. सेकंड, पेरेंट्स को पैनिक मत कर दो. बाकी सबका एडमिशन हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है. आपको अपना जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो सही तरीके से डिसाइड करना है. एंड आफ्टर डिसाइडिंग योर प्रेफरेंस लिस्ट, फिल इट अप प्रॉपरली एंड वेट फॉर द एंटायर एडमिशन प्रोसीजर टू गेट कंप्लीटेड. मेनी स्टूडेंट्स, मेरा किसी फ्रेंड को किसी पर्टिकुलर कॉलेज में आ गया, मुझे नहीं आया, हाउ इज इट हैपनिंग, मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा. We get panicked, we try to create discomfort. Don't do that. You have to be patient, student. You have to be patient until your entire admission procedure gets completed. पूरा admission procedure complete होने के बाद ही colleges will start functioning with their lectures. It is not going to happen midway or halfway. That admissions होने के लिए start हो गया and lectures भी colleges में start हो गए, ऐसा होने वाला नहीं है. So it's only after the entire procedure is complete will the lectures and other things commence. So be patient. Now, area preference selection, मैं ये point पे पहले भी focus किया था थोड़ा time. Again, I would like to highlight this thing that you select the college with respect to your area of residence. There is no sense in losing out your time and energy. Time तो lose होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगा आपका. ठीक है, यू मे थिंक दैट यू विल गेट अ चांस टू ट्रैवल, ओके, बट फॉर 10 days, 15 days, मैक्सिमम अ मंथ, दैट क्रेज इज देयर ऑफ ट्रैवलिंग 1 hour, 1.5 hour टू अटेंड द कॉलेज. लेटर ऑन यही ट्रैवलिंग टाइम, यही लॉस ऑफ एनर्जी हमारा रीजन बनता है फॉर स्कोरिंग. वो नहीं होना चाहिए. That must not happen. So select very wisely the colleges. Identify your geographical limit, how much you can travel. Okay, without losing out on your time, without losing out on your energy. Now, college allotment and admission process. It will be based on your merit. Now, this process of securing a provisional admission, okay, it
varies from college to college. A minimum amount that a college may charge may be either 50 rupees or they may charge you up to 500 rupees. That is the maximum. Now, as I was talking about the betterment option will be only based on your preference. Now, while entering the college codes, remember that your college you choose with respect to your zone, your ward under the Mumbai metropolitan region. Students, please remember with respect to science, the first two lists will be for vocational subjects. The first two lists will be for vocational subjects. उसके बाद ही general lists लगेंगे. General list in the sense general science. When I say vocational, it means for students who have decided of entering the field of engineering. Students who have decided for entering the field of engineering, for them the first two admission lists are dedicated. Now, अगर आप इंजीनियरिंग की तरफ फोकस्ड हैं, it is very important that you do not carry burden of extra subjects. टाइम कम है स्टूडेंट्स एंड कम टाइम में हमको हमारा परफॉर्मेंस एनहेंस करना है. So we do less work, but we do quality work. Now, how do you enhance your quality? By deciding your subjects. You can drop biology. You can go for either computer science or electronics as a vocational subject. Now, vocational subjects के लिए जो कट ऑफ परसेंटेजेस होते हैं वो थोड़ा हाई होता है. ओके, एंड जो स्टूडेंट्स ने फॉर्म में वोकेशनल सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है उन्हीं स्टूडेंट्स को वोकेशनल सीट्स ऑफर होंगे. अगर फॉर्म फिलअप करते वक्त आपने वोकेशनल सब्जेक्ट्स का जो बॉक्स है उसको सिलेक्ट नहीं किया है, ट्रस्ट मी, you can do whatever you want to, but you will not be able to get admission for the vocational subject. So that must not happen. If you have decided that engineering is the stream of your choice, it is the field in which you want to make your career, you must not carry the excess burden of biology right from your beginning in these 2 years of your 11th and 12th standard. Focus on the engineering aspect. Get a seat in a college for a vocational subject. So if you have decided, you must select that option in your form right in the beginning. So the initial list that will come out, the first two lists, that will be for the vocational subjects. Now, common errors that students make. Now, if you happen to choose a college whose cutoff percentage is higher than your percentage, the system will give you a warning. Okay, ठीक है ना. आपको मालूम है that आपका जो भी स्कोर है वो उस पर्टिकुलर कॉलेज के एडमिशन क्राइटेरिया में फिट नहीं करता. Still, if you go and select that college, what will happen? The system will warn you. It will inform you that you are making a wrong choice. But still, if you go ahead and you put it in your preference list, then it is your mistake. So please do not do that. You must be aware about the cutoff percentages of those particular colleges जिसमें आप अपना preference list बनाना चाहते हैं. Whatever is your preference order, you must be aware about the cutoff percentages of those colleges. Now, to continue with that selection or not is at your risk. Understand this thing. They have given you a warning. Still, if you select that college, you are making a mistake.
यू आर लूजिंग आउट ऑन वन ऑप्शन. आपके पास देने के लिए 10 ही ऑप्शन है. आप अगर 10 गलत ऑप्शन दे दोगे तो आपको किसी भी लिस्ट में कोई कॉलेज एलोकेट नहीं होगा स्टूडेंट्स. यू कैनॉट जस्ट फिल इन एनी इंफॉर्मेशन or name of any college of your choice. It has to be coordinated with your aggregate score and the cutoff percentage of that college. Now at any level, if you are not able to fill up minimum number of colleges, this is a very common question which students ask. Sir, 10 colleges का option 10 का 10 देना है क्या? Not necessary. Not necessary. If you are confident with respect to your score, with respect to the cutoff percentage of your college, आप limited options ही दीजिए. Don't give them 10 options. You may just give 5 college names in your preference list and you may wait for the government authority to allocate a college to you based on those 5 colleges. अगर आपको आपका preference list 10 कॉलेजेस का कंप्लीट करने में डिफिकल्टी आ रहा है, आपको आपका परसेंटेज, आपको कॉलेज के कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पे आपने कोरिलेट कर लिया है एंड यू आर कॉन्फिडेंट दैट अ पर्टिकुलर कॉलेज will be able to you will be able to secure a seat, no need of giving the 10 options complete. You can just give 5 options, you can give 6 options and you can complete the preference list information. But confirm the option by clicking on the confirm or submit button. आपको जो preference list रहेगा उसमें कॉलेजेस को सर्च करने के कुछ तरीके. कॉलेज का नाम टाइप करो, इट विल गिव यू अ ड्रॉप डाउन लिस्ट. और कॉलेज का कोड टाइप करो. इफ यू गो ऑनलाइन ऑन द कॉलेज साइट, एवरी कॉलेज हैज देयर कोड विच इज अवेलेबल ऑन देयर वेबसाइट. तो वो कोड आप टाइप करेंगे, वो कोड टाइप करने के बाद आपको कॉलेज का नाम आ जाएगा. बट वो कॉलेज का नाम आने के बाद में उधर प्रेफरेंस लिस्ट खत्म नहीं होता है. बिसाइड्स एवरी नेम देयर इज अ सबमिट बटन. सो व्हाट यू कैन आइडियली डू, first select the 10 colleges and then arrange the preference order. जो 10 कॉलेजेस मेरे दिमाग में है, जिनमें से किसी एक कॉलेज में मुझे अपना एडमिशन सिक्योर करना है, पहले मैं वो 10 कॉलेजेस को अपने प्रेफरेंस लिस्ट में ले लूँ एंड फिर मैं उनका ऑर्डर डिसाइड करूँ. व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर अ पर्टिकुलर कॉलेज. सो that has to be done, and besides every number and every name there is a submit button. Once you press that submit button, that number becomes the preference number of that college. That number becomes the preference number of that college. मुझे जेवियर्स में जाना है, मैंने कॉलेज कोड डाला, मुझे जेवियर्स चर्च गेट आ गया, मैंने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखा, मैंने सबमिट का बटन प्रेस किया, मतलब जेवियर बन गया मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस. अगर मैंने जेवियर्स टाइप करके छोड़ दिया, मैं उसके बाजू में सबमिट बटन प्रेस करने के लिए भूल गया, एंड में जाके मैंने बॉटम ऑफ पेज पे सबमिट फॉर्म ओके क्लिक कर दिया, द फॉर्म विल गेट सबमिटेड, इट विल शो फर्स्ट प्रेफरेंस ब्लैंक. और if you do that in any subsequent number, सेकेंड नंबर पे कॉलेज का नाम टाइप किया, आप सबमिट बटन प्रेस करना भूल गए, that number, that name of college will not be shown in your list. It will show that place vacant. So that must not happen. Now, your caste certificate validation. When I was talking about reservations, जब मैंने reservations के कुछ क्राइटेरियाज बताए थे, मैंने बताया था दैट आप किसी भी रिजर्वेशन क्राइटेरिया में अगर फॉल होते हैं, ओके, तो आपके पास उसका एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए. अब इस चीज को समझ लीजिए स्टूडेंट्स. मान लो आप किसी पर्टिकुलर कास्ट सर्टिफिकेट या किसी माइनॉरिटी या रिजर्वेशन क्राइटेरिया में फॉल होते हो, ओके, बट आपका परसेंटेज, आपका स्कोर अच्छा है, दैट यू कैन गेट द एडमिशन विदाउट द रिजर्वेशन. सो यू मस्ट ऑलवेज ट्राई फॉर दैट.
that gives you an added advantage later on. It will give you an added advantage later on. कैसे? आपका जो एडमिशन होगा उस पर्टिकुलर कॉलेज में वो कंप्लीटली बेस्ड ऑन मेरिट होगा, नॉट बेस्ड ऑन रिजर्वेशन क्राइटेरिया. मेरा परसेंटेज हाई है, ठीक है, एंड मैंने फॉर्म फिलअप करते वक्त कास्ट रिजर्वेशन डाल दिया. सो होता क्या है, जब मुझे कॉलेज एडमिशन प्रोवाइड करेगा, इट विल show me as a student coming under that particular reservation criteria. It will not show me as a student coming under merit. If my percentage is high, okay, I must target admission on merit, not on reservation. You can get an admission based on reservation, but you cannot get a score based on reservation. आगे जाकर स्कोर काम आता है. स्कोर इंटेलेक्ट पे डिपेंड करेगा, रिजर्वेशन पे नहीं. सो आपके पास आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, एट द बैक ऑफ योर माइंड यू मस्ट नो, ठीक है, आई हैव वन सर्टिफिकेट विच कैन हेल्प मी इफ नीडेड. आइडियली यू मस्ट टारगेट एडमिशंस इन कॉलेजेस बेस्ड ऑन मेरिट ओनली, नथिंग एल्स. हाँ, अगर नहीं हो पा रहा है, you think that you might not get it and you have the reservation criteria with you, you have a valid certificate, submit it, get the admission. That is one thing. But there is no substitute to merit and to intellect. Understand this thing. आपका एडमिशन का जो क्राइटेरिया है उसमें आपके मार्कशीट एंड मार्क्स सर्टिफिकेट का प्रेफरेंस हमेशा आपके कास्ट सर्टिफिकेट के प्रेफरेंस से ज्यादा ही होगा. तो इस चीज को ध्यान में रखो स्टूडेंट्स. डोंट गेट कैरीड अवे बाय दैट रिजर्वेशन. नाउ पे अटेंशन टू द सेकंड पॉइंट. If the school does not have the caste information in their records, then the student will be forced to apply in open category. अंडरस्टैंड दिस थिंग. आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, बट ये कास्ट सर्टिफिकेट को क्रॉस चेक करेगा कॉलेज आपको एडमिशन देते वक्त विद रिस्पेक्ट टू योर स्कूल. नाउ इफ योर स्कूल हैज नॉट बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट इट, स्कूल में एडमिशन लेते टाइम अगर स्कूल को इन्फॉर्म नहीं किया है, स्कूल से निकल गए, स्कूल से लीविंग सर्टिफिकेट ले लिया, रिजल्ट मिल गया, अब आप अगर जाकर स्कूल को इन्फॉर्म करोगे, इट इज ऑफ नो यूज. योर कास्ट सर्टिफिकेट इज ऑफ नो यूज. So you must be aware that if you are planning to secure an admission based on reservation, all government places that reservation should be depicted. On all government documents that reservation has to be depicted. Your college will cross check it. आपका कॉलेज इस इंफॉर्मेशन को क्रॉस चेक करता है. So please see to it that this information is available with your respective school also. Because many times ऐसा होता है, पेरेंट्स एडमिशन ले लेते हैं स्कूल में, उस टाइम पे हमें आइडिया नहीं रहता, हम कास्ट का इंफॉर्मेशन स्कूल को सबमिट नहीं किया है. स्कूल के नजरिए में आप एक ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट हो, इवन दो यू मे बी हैविंग अ वैलिड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, अ वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट. You may be applicable for that particular reservation, you may be applicable for that particular minority, but if your lower institute, that is your school, is not informed, any higher institute will not entertain your request of that particular reservation. Now, if your school living certificate has a caste mentioned on it, then it will be considered. अब ये क्या चीज है, इसको समझ लो. अगर मेरे स्कूल सर्टिफिकेट पे लिखा है my language is Gujarati, I can get a Gujarati minority in Somaya. I am a Gujarati. मेरे स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पे लिखा है लैंग्वेज नोन, लैंग्वेज स्पोकन हिंदी. Somaya will not give a preference. लैंग्वेज स्पोकन में अगर आप कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन, just to give you an example, Somaya has a Gujarati minority. Just to give you an example, there is RJ in Ghatkopar West. It has a North Indian minority. Your language must contain that particular sect which is considered minority by that college.
एंड ये परसेंटेज सबसे हाई होता है, विच इज 50%. If you remember the slide that we saw, the first category of caste reservation 50% था. That is with respect to college. There is a college in Mulund, Vani Vidyalaya. It has South Indian minority. Okay, but that is with respect to the language spoken. Remember this thing. Your caste certificate should have been certified by a government authority appointed by the government of Maharashtra. आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से अपना सर्टिफिकेट बनवा कर नहीं ला सकते, एंड बेस्ड ऑन दैट सर्टिफिकेट यू कैन नॉट क्लेम अ रिजर्वेशन. इट हैज टू बी वैलिडेटेड, इट हैज टू बी ऑथेंटिक. अगर ये सर्टिफिकेट में कहीं पर भी कुछ भी मिसिंग इंफॉर्मेशन रहा, किसी भी तरीके का मैल प्रैक्टिसेस रहा, आगे जाकर विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स your admission in that particular college will stand cancelled. Momentarily, under the pressure of admission and admission procedure, they will allocate the seat to you, but वो allocation को cross check किया जाता है. Some of the colleges do it at the time of admission itself, and some of the colleges they do it 1 or 2 months later. So all your certificates must have a proper authentic proof. If it's not authentic, trust me, it is not valid and it may put you in trouble later on. Now, this is our results for the HSC 2020. These students and many more of them have made us proud. Your questions, if you all have any, please. So that is it for now from us. We wish you all the best for your results and hope that you all come up with flying colors. Thanks.